Hello, good morning. Good morning, sir. Yeah, so almost time, but I don't see many students have joined right now. It's only 16. क्या करें, शुरू करें? काम आपकी अभी 4-5 लेक्चर का पड़ा है बेटा. Like that's also like to speed it up. स्पीड से चलने के हिसाब से 4 लेक्चर तो कम से कम और लगेंगे. 5 भी हो सकते हैं. एक आज लगेगा. कल मेरे को आइडिया नहीं आप लगा पाएंगे कि नहीं पाएंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन और. So someone should respond like shall we start already? I think मैंने 9:30 का टाइम दिया था. I got late in the traffic. आज धुंध बहुत है रास्ते में. And then the time is 9:45. कर दो सर स्टार्ट. चले ठीक है. तो उस थ्योरी पे चलते हैं कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है. तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. राइट. क्या लिख रहा है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कॉलम बेसिस. The design of steel structures, column basis. स्ट्रक्चर का कुछ स्पेलिंग गलत है? ठीक है. No, sir. गलत है सर. गलत है. गलत है सर. ठीक है. गलत है सर ये तो. ठीक है, इसको ठीक कर लें. राइट. इसलिए मैंने. So anyhow, today we are going to start entirely a new topic. Let me open. Let me open the PDF file for this column basis. Yeah, this is the PDF. So the same slide, but in PDF form. So we are talking about column design of steel structures, column basis basically. So whatever we design, so far we have started with like from top, right? अगर आप एक पूरी स्ट्रक्चर को देखें, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अ शेड हियर, लाइक दिस इज द शेड, फैक्ट्री शेड, राइट? These are the members, these are the cross members, and this is the truss here, like this, and the columns here, these are the columns here, then the cross members, right? This is the column here. So you got this, right? So practically, what exactly we are going to start today and we are going to discuss today is that whatever the top structure has, so it can be full truss, then the beams. एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है अभी, उसको थोड़ा सा हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. So we should have started with the beams, like these are the beams, right?
the horizontal members. Column का हमने अभी कर लिया है. Let me change the color. Okay. So the horizontal member, that's the flexural members, beams. ये अभी topic हम column base के करने के बाद करेंगे, right? So whatever the structure is, it has to have some kind of load, and all the loads transferred through various mechanisms to the bottommost part, and the bottommost part is the soil, and the soil के ऊपर एक हम आप एक जैसे is the foundation, right? Foundation. When we talk about the word foundation, so foundation is word which you are all which all of you are familiar with. Means the foundation is a part of the structure which takes all the load that is coming over the building, and that load is transferred to the subsoil, right? Soil and subsoil through the foundation. That so when we talk about the foundation in steel structure, we use the word basis, column basis, right? This is another term used for in steel structures, that is the synonym for foundation, right? So this is as simple as that. So we'll move into the next basics. So there are two types of column bases. So when I say base, that means the column foundation or the steel column foundation, right? So the first picture shows the, आपको इस डायग्राम को जब आप डिजाइन करेंगे इसको समझना बहुत जरूरी है. So like we'll spending like 4-5 minutes on this only. So there are certain basic members. So we'll be talking about the basic fundamental information about the steel column foundation. That is the slab base, right? So primarily we define the foundation in case of steel structures with the name base, and the first one is slab base. If you look at the word which is written at the bottom, it is slab based. Slab base, right? This is type. When we talk about the types of foundation, one is slab and the second is grillage. We'll be moving to the next slide, but before we move to next slide, uh, let me explain the various fundamental members of the slab base. I don't know how, if somebody is already familiar with it, या किसी ने like as part of your gate preparation, you might have gone through this basic of slab base, right? So what are the various members? So this is the vertical member, that's the column. That each and every column, this is another like each and every column that is part of the steel structure has to have its foundation, right? uh, that is very clear. तो हर एक कॉलम के नीचे एक स्लैब फाउंडेशन बनेगी, बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगी. तो उस फाउंडेशन के बेसिक मेंबर्स क्या हैं? So we are this is the vertical load being transferred through the column, and this column, for example, this is the column, it has to be placed over certain plate, right? So this one is the plate which I am shading here, and we call it as base plate, right? This is base plate. ये कॉलम को ऊपर किया है, नीचे बेस प्लेट आ गया है, राइट? तब कॉलम को बेस प्लेट के ऊपर ऐसे ही खड़ा नहीं करेंगे. आई एम ड्राइंग दी one view of that structure. So this column is connected with the base plate with the help of these angles, right? This is the angle which is connected, which is there, which is connecting the column with the base plate, right? This is we call it as cleat angle. So दो होते हैं कम से कम. Basically there are always two cleat angles. One we call it as web, जो कॉलम के वेब के साथ जुड़ा होता है, right? This is the web of the column, this one. And another one is connected with the flange of the column. So this is the flange of the column, this one, right? So this angle is, which is connecting flange of the column with the base plate, is flange cleat angle. So what we have discussed is the column, the vertical member, which is transferring its load of the structure to the foundation, and this column is connected with the base plate, right? And the base plate is connected with the column with the help of cleat angles.
And the cleat angles are two. One is connected with the web of the column, and another one is connected with the flange of the column. Because our target is to design the slab base or the steel column foundation. So when we are talking about the design, so we need to design the base plate. I'm marking it in blue color. So we'll be designing it. Number one, base plate. बेस प्लेट का इसका लेंथ कितना है, इसकी विड्थ कितनी है, and then thickness of the base plate. So this is the prime design criteria, means length of the base plate, width of the base plate, then thickness of the base plate. This is the design of the base plate, right, according to the load which is to be transferred to the soil. Then the angles, the web cleat angle and the flange cleat angle. This is second part. The base plate is number one. This is number two, which is to be designed. And number three, there's another marking here. This one. I mark it in green color. This one. And this one, then this one, and this one. One at each corner. So if you draw it in the plan, आपको चार देखेंगे ऊपर से, एक चारों कॉर्नर में, right? So these are called the foundation bolt. Foundation bolts, or sometimes we call it the holding down bolt, or sometimes we call it as anchor bolt, right? Right. So folding down bolt, angled down, all the machine foundation, all the steel columns are connected through the base plate with the concrete. And this, the bottommost part which you are seeing in your figure here is this one. This is the concrete base. And उसके नीचे फिर soil है, right? Natural soil surface. So this concrete base is prepared. Then we place the slab plate, that's the base plate. उसके ऊपर फिर column हम place करेंगे. Column को फिर हम cleat angle के साथ join करेंगे. This is the basic mechanism, right? So talking about the design, base plate number one, then the web cleat angle number two, and number three is the foundation bolt, right? So there are certain minimum criteria you should adopt. So we'll be discussing it one by one. So this figure which you are seeing right now is for the slab base, right? So another one is the grillage foundation. Third one is the gusseted base. So we'll be covering this in the next step. But before we go to these two, so we let us start with the slab base. I'm just shifting this to the hand note document. Right. So as far as your syllabus is concerned, introduction. What exactly are the bases, the steel column bases? So briefly, I have explained it. Then the types, the column base, the slab base, and the gusset base, and grillage, which I have mentioned. So we are not going to discuss grillage. This is not part of your syllabus here, right? Grillage foundation. So this one we will not be discussing. So we'll be talking about slab base and gusset base. So today's lecture will be focusing on slab base only. So already explained that there is a base plate, and there are two types of the base plate. One is that base plate is square. If you see this diagram, I already explained this picture. This is column here. This is sometimes we provide a cover plate along the flange of the column. If you see this picture, this shaded portion, which I am shading it right now, on the both sides.
base plate, cover plate is provided along the flange of the column. If we need, when we are designing it, we sometimes we see that the thickness of the flange of the column, like this thickness, TF, thickness of the flange of the column is not sufficient to take the load. So we provide additional strengthening of the column, flange of the column in the form of cover plate. So this is another feature. So I already explained this cleat angle here. This cleat angle, web cleat angle, this one is flange cleat angle, this red one on both sides, each side, right? Similarly, web cleat angle, एक आगे है, एक पीछे है. So this diagram is clear, the top view. This is the top view of the whole arrangement, right? Now you can see this line is the concrete line, right? उसके ऊपर फिर हमने ये प्लेट रखा हुआ है, this one. राइट, जिसकी प्लेट की विड्थ b है और डायमेंशन लेंथ l है, राइट. कॉल प्लेट के एग्जैक्टली सेंटर में, सो द column has to be exactly in the center, matching the CG of the base plate. So this one is the I section. I just if you like this I section, that's the column. Then the cover plate, this portion is cover plate. Shaded one. Then this is the angle. एंगल का थिकनेस नजर आ रहा है आपको, और दिस इज द एंगल. मैं अगर कुछ सेपरेट करके बनाऊं तो एंगल इज दिस इज लेंथ, this is the thickness of the angle. So this is flange cleat angle, this one is also flange cleat angle, this one is web cleat angle पीछे है, और this one is the also web cleat angle. ये क्रॉस जो नजर आ रहे हैं, these are the bolts, right? If it is connected with the help of bolt, तो बोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है. So this is the basic top view of the slab base type. So as you see, let me increase the size here. Yes. So when we are going to design the base plate, slab base, so there are two types of slab base depending upon the size and shape of the base plate. As you can see, plate can be square, means length and breadth of the plate can be same. Like this plate can be square, like L is equal to B. Another one is L is not equal to B. Right, in that case, it can be rectangular. So both the options, will try to solve one numerical, giving both the options, and how do we do it, right? Already explained that we need to design the base plate, that is length, breadth, and T. Then the cleat angle, then we call it as nominal. So minimum two flange cleat angle connecting the flange, and two cleat angle connecting the web of the column with the base plate. Then we need to define the A and B. A and B is what? Let me erase this one. Now you see from the diagram. सर क्लीट से लेके जो बोल्ट है वहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है बेस प्लेट से, That's the edge of the base with the outer side of the angle or the outermost dimension of the flange. So दो केसेस में पॉसिबल हो सकते हैं. मैं इसमें अभी शो करूँ. लेट मी चेंज द कलर है. ओके,
So if you see that this dimension is B, right? In case this angle is projecting beyond the flange, sometime it can happen. The flange is finishing here, so this will be the B. So, but generally we match the flange edge of the angle, flange of the column with the size of the angle, right? So anyhow, the outermost edge of the angle or the flange of the column till the outer edge of the base plate. So this dimension on either side, one is called B and another one is called A. Like along horizontal axis, we can name it A or B, and the other dimension will be B. So A, B basically are the projections of the base plate beyond the edges of the flange, right? So as you see, this is the edge of the flange here, and this is the flange of the angle on other side. So the flange on both the sides, उसके बाद का जो distance है till the end of the plate is A and B. So these are the projections beyond the column end. So इस चीज को ध्यान में रखना है, right? So we also need to define this A and B, right? So A and B are the projections beyond the column end along x-axis and y-axis. So primarily we'll be finding the length, breadth, and thickness. And as far as the web cleat angle is concerned, we just provide two flange cleat angles and two web cleat angles of nominal size, right? And then the when we are defining LB and T, there's the length and breadth. We'll also be defining projections, right? So this is the Gusset based nomenclature. इसके ऊपर बाद में आएंगे. Let us start with one numerical with slab base type, right? So what is the difference between Gusset base and slab base? इसको बाद में करेंगे. So when we are designing it, not much difference is but so we will be starting with the design of the slab base in today's lecture, right? But मेरे को एक बड़ा डाउट हो रहा है कि I don't know आप सीरियस है या नहीं है. आज की क्लास में सिर्फ 20 लोग अभी 20 में अभी एंटर हुए. कोई बात नहीं. So when we are talking about the design of slab base, the target, already told you that size हमने slab base plate का size define करना है, thickness, length and breadth. So when we say size, that means the thickness, length, breadth and thickness. Then nominal number of anchor bolts. These are the 4 bolts. चारों कॉर्नर में एक एक लगेगा, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, maintaining the proper edge distance, right? As per the basic bolt criteria. Right, बीच में ये आपका कॉलम रहेगा. Then nominal cleat angles. Already explained that दो बैक क्लीट तो लगेंगे दो, एक फ्रंट पे एक पीछे, और दो फ्लैंज क्लीट एंगल लगेंगे, एक साइड राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, राइट? So this is the target. So how do we start? This is step number 1. The step number 1 is that size of the base plate को जो हमने डिजाइन करना है वो कैसे स्टार्ट करना है. So characteristic strength of concrete is the basic governing criteria to start designing the slab base type, because each and every load which is to be transferred through column through base plate to the base concrete, right? बेस कंक्रीट का जो उससे हम शुरू करेंगे उसकी स्ट्रेंथ को. जैसे हमने कंप्रेशन में हमने स्टार्ट किया था ना, दैट सेलेक्ट एफसीडी एनीवेयर फ्रॉम 90 to 200, right? So we start the characteristics with with the characteristic strength of concrete. So can somebody tell me what is characteristic strength of concrete? We call it as FCK. For example, मैंने साइड पे लिखा हुआ ना, for M20 concrete. For M20 concrete, the characteristic strength is 20 MPa, right? Hello, थोड़े लोग हैं.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. So what is characteristic strength? What is 20? Sir, design strength. A design strength is some strength which we need to design, right? When I say M20, करेक्टर का मतलब क्या होता है? करेक्टर का मतलब होता है characteristic strength. When I say the strength is 20 MPa or 20 Newton per millimeter square, so it what does it mean? The जो हमने डिजाइन कंक्रीट करना है वो 20 MPa का करना है, राइट? M20 कंक्रीट डिजाइन करना है. तो M20 का मतलब क्या होता है कि M20 इसकी कितने दिन की स्ट्रेंथ होती है क्योरिंग की? चले, ये टॉपिक नहीं है, आप इसको मैं आपसे पूछ रहा था, बट इट हैज टू बी देयर बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन. सो दिस इज सम बेसिक, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय characteristic strength at how many days and after how many days of curing at what temperature, right? All these things are defined by this characteristic strength. So anyhow, so हमने जो स्टील का कॉलम डिजाइन करना है वो यहाँ से शुरू करना है. दैट करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें क्वेश्चन में दी होगी या हमें पता होगा कि इस स्ट्रेंथ का कंक्रीट हमें डालना है. अगर नहीं दिया तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद M20, राइट? फॉर M20 FCK is 20. FCK is 20. So if you multiply it with 0.45 multiplied by 20, so this will give you the strength required FCD जो हमने कंप्रेशन मेंबर में किया था. तो इसमें अगर 20 है तो दिस विल बिकम हाउ मच? 9, राइट? This will become 9, right? So you divide the effected load with this 0.45 FCK, you'll get the area of the plate. Area of the plate. This is step number 1. Area of the plate. Then once you have got the area of the plate, then to select the plate size from economical considerations, keep A and B as equal. What is A and B? सर एज से वेब प्लान Projection. Projection, right? हाँ So जी सर. this is the plate here. बीच में आपने ये कॉलम प्लेस कर दिया है, तो आप ये डिमेंशन A और ये वाली डिमेंशन B दोनों को बराबर रखना है. This is one consideration, right? So from economical considerations, keep A and B as equal. Then as per the code, you can open the code here. As per the code requirement, refer clause 7.4.3.1 that gives the thickness of the base plate. So I can open the steel code for you. You can open as well 7.4.3.1. What page? This is index 7 column basis, page number 46, right? Yeah, so this is the page, column basis, right? So this factor we already have discussed, that 0.545 FCK. The size of the plate, ये projection के बारे में लिखा है. The formula that I was referring to, that this we are talking about slab base, and thickness of the slab base is given by this formula, right?
So the same formula I have mentioned on the page here. So you can always, you don't need to remember it, but you can always refer it, right? So I have mentioned it on the notes as well. So you just have to remember that this formula is there in the code itself. So you can very easily calculate the thickness of the base plate once you have defined the value of A and B. ए आपको पता लग गया इस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बी आपका क्या आ जाएगा रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोन लाइक देयर इज term here W. So W is the pressure factor, that is the total load which is given to you, and area of the base plate that we have provided, which we have calculated in step number 1, right? So the load divided by this area, so we'll get W and put the value of W here in this relation, and also the value of A and B, and gamma MO is the partial safety factor for steel, so we can always calculate, right? And it has to be greater than thickness of the flange. So once you are done with the thickness of the plate, so we are now clear with L, B and T. Then anchor bolts, ये आपने सिर्फ लिखना ही है, आपको जो डिजाइन नहीं करना. 4 numbers, 20 to 20 mm dia bolt, just write it. 200 to 300 mm long, like this is the concrete base. तो फाउंडेशन बोल्ट को ऐसे प्रोवाइड करते हैं. आपने ड्राइंग में देखा होगा दैट फाउंडेशन बोल्ट्स आर देयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स दैट कम इनटू द मार्केट. तो 20 से 22 mm का डाया एंड 200 से 300 mm की लेंथ का बोल्ट हमने चूज करना है with proper edge distance. So this is one part. The second is bolted connection. So this again we are not going to design the angle, cleat angle, just write nominal. You can start with 60 by 60, can go up to 90, right, depending on the available of the size of the base plate. So this is again you have to just mention, and if it is welded, then welding के ऊपर जब हम connection check करेंगे, welding का design आपको आपने किया हुआ है, right? तो लेंथ रिक्वायर्ड जब क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हैज टू बी चेक्ड अगेंस्ट लेंथ अवेलेबल, राइट? सो दिस इज सो ये चार बड़ा सिंपल प्रोसेस है. इसमें आपको एक न्यूमेरिकल अभी हम स्टार्ट करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में आपको बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट? So start with this numerical. Design a column base of column ISHB. The size of the column is given to you. This is the nomenclature of the column. Effected load which the column is carrying has to be transferred to the foundation is 1200 kilonewton. For the following conditions, that load is transferred to the base plate by direct transfer of column flanges, right? पहले केस में हमने इस केस में हमने बोल्ट यूज करने हैं, राइट? एंड सेकंड इज दिस इज सेकंड केस. दीज आर टू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. लोड इज ट्रांसफर्ड बाय वेल्डेड कनेक्शन. दूसरे केस में हमने वेल्डिंग करनी है, राइट? एंड द थर्ड कंडीशन विच इज गिवन टू यू दैट यूज M20 कंक्रीट. अगर ये नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में, यू कैन ऑलवेज अज्यूम M टू स्टार्ट विद M20 कंक्रीट. M20 concrete is the minimum concrete which is required to be there for foundation of any steel column. आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, right? But M20 is the minimum. So we start with M20. So the basic process is that we need to design the base plate. So as we are doing in all the numericals, that we just write the basic properties of the steel column from the steel table. Depth, that is this dimension. If you see, this is the I section, right? This dimension is 300. Then TW 9.4, thickness of the web, it is. Then thickness of the flange, this dimension. Then BF is this dimension.
This dimension is BF, right? This is 250. So FU, these are the properties of the steel. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, we always assume that it is 410 and yield strength is 250 for FE 410. तो ये अगर नहीं भी दिया, you can always assume. So this is basic information. Load given is 1400 kilonewton. That is factored load. The first step is calculate the area of the base plate. Step number 1. To check the area of the base plate, the load given has to be divided by 0.45 FCK. 0.45 FCK. And FCK in given question is 20. So 1200 load given is 1200, not 40. So 1200 into 10 raised to 3 Newton divided by 0.45 into 20, right? इस हिसाब से जो प्लेट का एरिया आ रहा है वो दिस इज कमिंग आउट ऑफ दिस. मैं आपको एक फनी सी एग्जांपल बता रहा हूँ. द क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन वाज गिवन टू द 6th semester students in one of the examinations. तो किसी एक बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया, उसने कैलकुलेट करने के बाद गलती से, because it is coming out to 1 3 3, then again 3, then 4, then 5, right? 1 2 3 4 5, 0.33. अब उसको कहीं पे गलती से 1 3 उसका मिस हो गया, राइट? अब उसने इतना ही लिखा, तो बाकी लोगों ने कॉपी किया, तो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड विद दिस ओनली. तो आप ऐसी गलती ना करें. अगर आपको कॉपी भी करना है तो ध्यान से करें. Of course, the value shall be different. Anyhow, so we have worked out the area. It is coming out to be this much. Now, the second, this is step number 2. I have told you in just 10 minutes ago that keep the projections equal to calculate the overall size. अब एरिया प्लेट का तो पता चल गया, बट उसमें लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी. So this has to be decided by this factor, right? Keep A and B as equal, right? So I'm just taking one blank page. Okay, this is the sheet here. So now the area we have calculated. The area which is coming out to be is this much. 1333.33 mm square, right? So this is the plate here. इसका एरिया पता है, but we need to define L and we need to define V, right? Exactly in the center we need to place the column. The column का size क्या है? This is the column here. Right. This dimension is how much? Side dimension कितना है? D. This is 300, right? And this dimension is 250. And for example, this is A. This will also be A, right? And this dimension is B. And this dimension is also B. So the B is equal to 250 plus 2A.
and L is equal to 300 plus 2B, right? And B into L, we know that this is equal to 13333.33. So we can work it out. 250 plus 2A multiplied with 300 plus 2B is equal to this, right? So A is equal to B, so you can very easily solve what is A, right? Can you calculate? I give you 5 minutes to calculate this. हेलो, आप Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कैलकुलेट करें फटाफट कितना है. तो 33,195.83 ए यही होगा सर. है, तो 3 4 5 5 डिजिट है ना. हाँ जी सर, यही होगा 33,195. let Dot somebody else calculate. यूनिट क्या है आपके? सॉरी सर, गलती होगी. एक चीज रहेगी, सॉरी सर. मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि हमारा कॉलम का साइज तो 300 mm है, 300 mm और by 250 mm. So it has to be something like in that range, right? 30,000 तो नहीं हो सकता ना, 100 के आसपास होना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. हाँ जी सर, गलती होगी. और कोई नहीं कर रहा है? सर कर रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. हेलो. हाँ जी नेगेटिव में आ रही है वैल्यू. बेटा, दो वैल्यू आएंगी ना. -125 -150 आ रही है. नहीं नहीं नहीं, यार कमाल है. कितनी आ रही है आपकी वैल्यू जो भी माइनस 125 -150. -120 -150, राइट. ठीक है, तो अभी किसी और को कैलकुलेट करने दें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है.
पर इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए यार, ये तो बेसिक्स है आजकल 7वीं 8वीं में सिखा देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नहीं, दोबारा करो। प्रॉब्लम पता क्या है, आपको लोगों को ना आदत नहीं है कैलकुलेशन की, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। सर एक 45.50 आ रही है ओके, एंड दूसरी माइनस में आ रही है कितना? -320. -320, right? So because minus can be not be answer, so this has to be the answer, right? यस सर. तो कितना आया अभी बेटा? जो पहले बोला था मैं, अभी नाम मेरे को याद नहीं है आपके ना। अभी रोहित बोल रहा है ना, यस सर. उससे पहले कौन था? सर अनुज था शायद. अनुज जी विद डबल जे। यस सर. तो कहीं ना कहीं तो गलत है आप, है ना? यस यस सर. तो आप ठीक कर लें। तो आंसर इज because both a and b are equal, so we this dimension is coming out to 45.5, right? So we take it as 46. Clear? Right? So a is equal to 46 uh, because we are to be on safer side, because we are designing, so we always have the liberty to go a little bit beyond that. So take a is as 50 mm, so make the calculations easy. So a is 50, so b is 50, so what is l then? And b, l is 250, 300 plus 2 into 50, right? It becomes 400 mm. And similarly 250 plus 100, it becomes 350, right? So this is the size. So the place plate अभी आपका जो बन गया है, this size of the base plate is, the length is 400 and other dimension is 350. Clear? यस सर. So area provided, इतना रिक्वायर्ड नहीं था, थोड़ा सा हमने ज्यादा कर लिया, तो एरिया प्रोवाइडेड इज, ये हमें कैलकुलेट करना है। एरिया बेस प्लेट प्रोवाइडेड इज 400 इंटू 350, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, कितना है? एनी हाउ जितना भी है, राइट? दिस इज mm स्क्वायर। अभी तक तो कर लिया होगा, कितना है? 143500. 143,500 mm स्क्वायर, इतना एरिया हमने प्रोवाइड कर दिया, राइट? इतना ही है। एनी हाउ, so next step is to calculate thickness of the base plate. थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, तो अभी आप स्टील कोड खोल लें, है किसी के पास? तो थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, आप स्टील टेबल कोड देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस सर 140,000 आ रहा है. क्या? सर 1,40,000 आ रहा है एरिया एरिया. सर इसमें भी गलती करते हैं कि माला है, क्या बोले अभी? हाँ, चलो मैं लिखता ही नहीं भाई, ठीक है? मेरे को एक गजल याद आ गई है, आपको सुनाऊं? सर वो जल्दी जल्दी में चार्ट. हाँ सर. एक निदा फाजली की गजल है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है? वाह वाह सर, वाह वाह. तो आप तो वो काम कर रहे हैं ना, कहता सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। आप नादान है सारे। anyhow, so this is gamma mo divided by fy
or the whole under the root. This is from IS code, right? The formula which I had shown to you, this one, right? And it has to be greater than TF. So calculate this one. So what is W here? W is the load which is given and the area provided. Area provided is 400 into 350. So calculate this one. 1200 into 10 raised to power 3 divided by 400 into 350. ये अब ये कैलकुलेट करें सही सही W this one. सर 8.57. Yes, sir. 8.57. अभी सब सारे यूनिफॉर्म है. Okay. 8.75. What next? सर Unit. TS. Unit. Unit. सर सर M अच्छा W पूछ रहे हो आप. हाँ. So A भी एक check है because it has to be less than 0.45 FCK. So 0.45 FCK is 9, right? 9 Newton per mm square. So हमारा जो area provide किया base plate का, that is okay. So this is we check. So आप ये वाली value जो है W की हम इसमें use करेंगे. Now you calculate this thickness. Is 2.5 into 8.57 A square. What is A? 50 जो हमने लिया हुआ, right? Minus 0.350 square into gamma MO. Gamma MO is 1.5 FY is 250. इसमें तो कुछ को कंफ्यूजन नहीं होगा. Now you calculate this, and it has to be less than TF. And what is TF? Thickness of the flange of the column, जो भी हमने लिखा था. सर 12.84 आ रहा है मेरा. So thickness of flange is 10.6. Yeah, it's not less than, it is greater than. This check. कितना है? सर 12.84 आ रहा है. सर कोई चेक कर ले साथ में. Right. Somebody else should check. 12.84 here. Right. This is 12.84 mm, and for check it has to be greater than TF as per this code, right? This is TF. It has to be greater than TF. So that is okay. So TF is 10.6, which is from the steel table. So this one is okay. So the size of the base plate, now we have worked it out. So provide, this is the answer basically, one of the answers. So provide base plate 400 into 350 into 10.6 है, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे. So always take the whole figure. So this is sorry 12.84 है, 13 के आसपास आ रहा है, but we make it as 14 mm. So we always go with the even numbers. Mm. This is mm. This one is mm. So this is the size of the plate. This is one part of the design, right? So इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, right? क्लियर हो गया. उसके बाद हमने क्या करना है? सर बोल्ट और वेल्डेड के लिए चेक करना है शायद. हाँ. So we go with the next process that we have done with the. So the first case is the load is directly transferred through direct
बेरिंग, इसका मतलब है सेंटेंस का आपको लिखना है, याद रखना है that it is to be connected with cleat angles, nominal cleat angles on both the sides, right? So nominal cleat angles to web cleat angle. You can always select as 50 or 60 by minimum thickness, because similarly to flange cleat angles, fifty by 50 by 60. Just select the nominal from this cleat table. So just mention this one. This is then the next is anchor bolt. तो सेलेक्ट चारों कॉर्नर में एक बोल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. तो ऑलरेडी मेंशन दैट सेलेक्ट 20 mm 200 mm long, 4 numbers each corner, मतलब 1 at each corner. So this is to be mentioned. So this will complete your design for the first case. So the second case is welding. Second case is welded connection. तो वेल्डेड में क्या है कि आपको दिस इज द प्लेट, दिस वन इज द कॉलम. तो एक एंगल यहाँ पे लगा है, दूसरा एंगल दूसरी साइड पे लगा है, देन अनदर एंगल इज ऑन दिस साइड एंड अनदर एंगल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लैंज, राइट. तो अब इसको वेल्डिंग में करना है, तो वेल्डिंग लेंथ जो आपके पास अवेलेबल है वो कितनी है? आप वेल्डिंग में आपने सॉरी, जो वेल्डिंग में आपको ये एंगल्स प्रोवाइड नहीं करने हैं. वेल्डिंग में आपको एंगल्स प्रोवाइड नहीं करने, आपको सिर्फ वेल्ड करना है, राइट. तो वेल्डिंग की लेंथ जो अवेलेबल है वो आप कैलकुलेट करें कितना है. दिस इज द कॉलम. इफ आई मार्क द वेल्डिंग इन रेड कलर, तो वेल्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट. वेल्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, वेल्डिंग आप अंदरली साइड पे कर सकते हैं, वेल्डिंग आप अलोंग दी वेब कर सकते हैं. तो जब रेड में मार्क किया मैंने, दिस इज द लेंथ विच यू कैन वेल्ड. आपको क्लियर हुआ? So can somebody calculate the available length of the welding? Hello. Yes, sir. Length of the welding available. तो अब मैं एक डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ क्लैरिटी में. Okay. This is the plate. This is the column. Now I'm marking the welding in blue color here. This one. This one. Same as the other side. This one. Right. So the length available which we can weld. कॉलम को सीधा But can you show the dimensions of? या डायमेंशंस तो आपको बताया था मैंने. दिस इज 250
This one is 300, and this thickness is thickness of the flange from the steel table. Yeah, this is 10.6, and this thickness, this is 9.4. And मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, राइट? लेंथ विच इज अवेलेबल फॉर वेल्डिंग is 2 into 250 plus 2 into 250 minus 9.4 plus 2 into 300 minus 10.6. ये समझ लगी आपको कैसे आया? 1560. हेलो, जो अभी मैंने लिखा है So 1560. 1560, जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से 1539 आ रहा है. Okay. So मैं दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार. चेक करें. सर इसको सोल्व करके भी 1560 ही आ रहा है. तो नहीं आ रहा है. Yes sir 1560. ठीक है. सर 1560 आ रहा है. ठीक है, मैं 1560, राइट. So this is the length which is available for welding, right? तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये लेंथ हमारे पास अवेलेबल है और जितनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेल्डिंग चाहिए हमें उतनी लेंथ ये है कि नहीं है. अगर नहीं है तो क्या करना, अगर है तो क्या है, राइट? सो द नाउ लेंथ रिक्वायर्ड, आई एम मार्किंग इट इन दैट on the left hand side. Calculate the length required. How to calculate the length required? आपने डिजाइन ऑफ वेल्ड पहले किया, उसी को हमने रिपीट करना है. लेंथ ऑफ वेल्डिंग रिक्वायर्ड, अगर आपको याद होगा तो हमने किया था assume the welding size. इस केस में आपने assume कर लेना है, राइट? You can assume 6 mm or assume 8 mm. So I have assumed 8 mm. Right? Then throat thickness 0.7 into 8. This is throat thickness. आपको वेल्डिंग का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप रिवाइज कर लें. So this is 5.6. Right? So strength of weld per unit length is equal to, if you remember, this is throat thickness 0.7 into 8 multiplied by fu divided by under root 3 into gamma mf, right? That is 1 point gamma f, that is. So you calculate, this is coming out to be 0.7 into 8 into 410 and divided by under root 3 and divided by 1.25. ये आ रहा है आपका 1060.48. हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ इधर उधर हो, बट दिस इज कमिंग आउट ऑफ दिस. This is Newton per mm.
right? Now the required length is, I'm just rubbing this figure. सर ठीक है वैल्यू. ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेंथ इज, लोड जो आपका दिया है, राइट, उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, दैट्स ऑल. 1200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1060.48 कितना आया? 1100 समथिंग. सर 1131.56. ओके, सो 1132 mm, राइट. इतना रिक्वायर्ड है. अवेलेबल कितना हमारे पास? 1560. सो वी कैन इजिली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द लेंथ. तो इसमें अगर थोड़ा सा कम करेंगे तो हम करेंगे कि यहाँ पे हमने कर दिया, मैं आई विल जस्ट मार्क इट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिस लेंथ अलोंग द वेल्डिंग लेंथ. थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे ताकि 1132 चाहिए, so we can always provide 1200 weld length and equally distribute along symmetrically. Weld 8 mm, right, symmetrically. So this is the design. Clear? So Yes, this sir. is इसमें एक हल्की सी वेरिएशन है. This is one part. Numerical itself is complete. So if I go for there's another variation in, you can go for, just read this. Selecting the size of the base plate. So we have taken A is equal to B. That projection we have taken A is equal to B, right? According to that, L and B has been calculated, right? There's another option that if we decide to have square base plate. अभी हमने बेस प्लेट कैलकुलेट किया, इसका साइज आया हमारे पास 400, कितना था साइज प्लेट का, कितना कैलकुलेट किया हमने? सर 400 into 350, right? 350 into 14. Yeah, that is thickness. So this is rectangular plate. So we can opt for another option, that is square base plate. Square base plate में क्या होगा? L is equal to B. Clear? So if L is equal to B, so you can always calculate L directly by dividing the area, like taking the square root of the area and getting this dimension, right? In that case, this size is coming out to 365, and A as takes 360, 370 into 370, then work out the projections A and B. समझे? जब A and B को वर्कआउट करेंगे, अब हमने लेंथ फिक्स कर दी है, then this is 370, this dimension is also 370, right? So this dimension is 250, this dimension is 300. So we can work it out. So A is equal to this is total is 300. So D plus 2A is equal to 370. Similarly, BF plus 2B is equal to 370. Right. So we work it out A and B, which is coming out to be 35 and B is coming out to be 60. Right. तो हमने जैसे शुरू में लिखा था कि A और B आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, आप B को A लिख सकते हैं, A को B लिख सकते हैं, बट जो इस कैलकुलेशन के बाद अगर जो बिगर डिमेंशन है, तो कंसीडर बिगर ऑफ B एंड A एज A फॉर ऑल. मींस अभी एक डिमेंशन हमारी आई है 60, दूसरी डिमेंशन आई है हमारी 35. राइट. So जो along the length of the
कॉलम जो है डी के पहले जो डिमेंशन उसको हम 60 लेंगे, दिस डिमेंशन इज 60 एंड द अदर डिमेंशन इज 35, राइट. सो दिस इज अनदर उसके बाद हम once A and B is defined, you can always go for thickness of the plate, right? So you can rework out the thickness of the plate according to this criteria. This is a little variation. This is another approach. So we have to see it if it is given in the question. Otherwise, from all economic consideration, if you see the notes here, I have written it very clearly. This line, from economic considerations, always take A is equal to B. So this is the topic about the column bases, and that is one part, that is slab base type. कल को हम तो नहीं करेंगे, मंडे को हम कैंपस में आ जाएंगे तो कैंपस में स्टार्ट करेंगे. Those who will not be coming, they will be joining online. सर गुरमोहन सर से बात होगी कि लैब को भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर somebody थोड़े लोग रहेंगे जो कल नहीं आएंगे, 4-5 लोग, उनका कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, will rework it out, right? But we wish that all of you will be reporting to the campus tomorrow, except few of you, right? So online ही लैपटॉप आप अपना सारे preferably लेके आए, because we'll be following both the modes, like the delivery will be through laptop but sitting in the class, right? Also काफी देर बाद आ रहे हैं लोग, तो we always advise you to keep the precautions as advised by the government, as advised by the management. अभी तो खैर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, सभी को पता है कि कैसे सेफ रहना है. So keep those precautions, like you should keep following those precautions when reporting to the campus. तो एक हॉस्टल के रूम का नोटिस आपको चला गया है, that practically or technically all the rooms which have been occupied till date have to be vacated once you report to the campus. तो एक टेक्निकल प्रोसेस है, क्योंकि एक बार रूम खाली करके फिर उसी टाइम आपको रिक्वेस्ट बेसिस पे साथ साथ अलॉटमेंट हो जाएगी. सर रीअपीयर फैब के फर्स्ट वीक में या एंड के वीक में? क्या सर रीअपीयर फैब के फर्स्ट वीक में या एंड के वीक में? एंड ऑफ जैन. ओके सर. तो मंडे को मिलते हैं कैंपस में, राइट? सर पुरानी वीडियो शेयर कर दो सर, पुराने लेक्चर्स की. कल मैंने कर दी थी उदय के साथ. फिर उदय से पूछा, बताया नहीं उसने. उदय को पकड़ लें सभी लोग. ठीक है सर. सर जी सर वो टेंशन वाला हो गया, हमारा टेंशन वाला करा दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. उसकी टेंशन न लें आप नोट्स आपके पास हैं, किसी ने मिस किया तो. मैंने डे फॉर यस्टरडे आई हैड शेयर्ड ऑल द नोट्स, राइट? फिर भी कुछ लाइव डाउट होगा, हम मंडे को करेंगे, क्लियर? पर उसकी एक ही कंडीशन है कि आपको उसमें गो थ्रू होना पड़ेगा, तो होमवर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा. ओके आज सर. 22 लोग आए मेरे पास, सिर्फ 22 में से 26 लोग मिसिंग है, 48 में से. आज शायद बाजार में मिठाई मिठू लेने गए होंगे. कॉलेज आने की तैयारी कर रहे होंगे. हाँ वो मिठाई लेने गए होंगे, तो कॉलेज आके बांटने भी तो होंगे ना अपने सभी को. यस सर, आपका मुंह मीठा कराना सबसे पहले. हम भी करेंगे, आपको भी कराएंगे, राइट? तो सी यू इन द कैंपस ऑन मंडे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.